काम करेंगे. He tweeted this in Hindi. India's point, the era of war is over, was incorporated in the final communique. Is India making a major impact on the world stage this G20 and beyond as India assumes presidency? Hugs and handshakes. Beaming smiles. India's arrival on the G20 high chair. Conveyed to India the Prime takes Minister Modi over of India. G20 presidency. The rise and roar of India. That's our top focus on the Newstrack. Was handed over to India by Indonesia as India now assumes presidency of G20 for the coming year. Prime Minister Narendra Modi said it's a matter of pride for Indians. Congress leader Jairam Ramesh, however, said the G20 summit will be milked for 2024 elections. What does the G20 presidency mean for India when Prime Minister Narendra Modi says the effort will be to have an inclusive, ambitious, decisive and action-oriented approach? I'm Gaurav Sawant. We get you the big story, but first, as always, the headlines. More details emerge in the Delhi murder case. Accused Aftab to undergo a narco test. Sources tell India Today Aftab hid Shraddha's body in the bathroom a day after strangling her. Shocking crime caught on camera. A crazy lover kills his partner for allegedly cheating on him. Shoots a video of her lying in a pool of blood, bleeding to death. Aam Aadmi Party MLA's relative aides arrested for allegedly taking a bribe for promising a ticket for Delhi civic elections. Complainant releases a video. Aam Aadmi Party rejects the charge. Missile strike in Poland leaves 2 dead. Reports suggest the blast was caused by a missile fired by Ukrainian forces. Former US President Donald Trump throws his hat in the ring for 2024 race to the White House. Says it is time to make America great again. वसुधैव कुटुंबकम, यही संस्कार विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। भारत बदला है। आज अपने विकास के लिए भारत जब अमृत काल का रोडमैप तैयार करता है तो उसमें दुनिया की आर्थिक राजनीतिक आकांक्षाओं का भी समावेश है। India now assumes the presidency of G20. Prime Minister Narendra Modi said it's a matter of pride for Indians. He said India will organize G20 in different states and cities across the country and make G20 a catalyst for global change. As the Prime Minister spoke of making G20 inclusive, ambitious, decisive and result-oriented, Congress MP Jairam Ramesh took a jibe at the Prime Minister, saying that the 2023 G20 summit will be milked by what he termed was the world's greatest event manager for Lok Sabha elections. Geeta Mohan with our top story.
handshakes to the beaming smiles, to the friendly waves, to the unmissable body language. And the throne of the leadership I confer to Prime Minister Modi of India. India's arrival on the high chair of the G20 has been a high-profile one. Prime Minister Narendra Modi ceremonially taking over the presidency. भारत की G20 अध्यक्षता इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी. And immediately laying the ground for India's leadership. The two-day summit in Bali has been one long chain of viral images, including this evocative stopover at one of Bali's famous mangroves, a signal on sustainable living and climate change. But it was the power play that dominated the narrative. From Modi's informal chat with Chinese President Xi Jinping, their first handshake since the Galwan clash, to a heartfelt meet with the new Indian origin PM of Britain. Prime Minister Modi made an excellent speech at the close of the summit, and there's a lot of positivity about about all the positive things that have come out of this summit. With Modi overseeing India's turn at the G20 high chair, he also provided a glimpse of what India's presidency would look like in 2023. G20 की अध्यक्षता ग्रहण करना हर भारतीय के लिए गर्व का अवसर है. हम अपने देश के विभिन्न शहरों और राज्यों में G20 की बैठकें आयोजित करेंगे. साथ मिलकर हम G20 समूह को वैश्विक बदलाव का कैटलिस्ट बनाएंगे. While Modi crafted India's G20 vision, back in India he was under attack by the Congress party, accusing him of event management around the G20. With Geeta Mohan, Bureau Report, India Today. At Samarkand, Prime Minister Narendra Modi had told the Russian president that the era of war has ended. That line was echoed in the G20 outcome document as India takes over the presidency of this very powerful economic group in extremely challenging times. But is this only rotational and ceremonial, or is there merit in the Congress saying that the Prime Minister will milk the 2023 presidency for 2024 elections? Joining me on the show is BJP MP and leader Syed Zafar Islam. Anshul Avijit represents the Congress party. Ambassador Ashok Sajanhar is a former top diplomat who joins us for Diplomatic Perspective. Also with me on the broadcast is India Today's Shiv Arur and a Foreign Affairs editor Geeta Mohan. Shiv, I want to begin by asking you, world leaders tweeting in Hindi, reaching out to Prime Minister Narendra Modi. What do you make of the optics from Bali? You know, the optics couldn't have been better as far as India is concerned, Gaurav. Of course, there will always be those who say, this is a turn-based presidency of the G20, etc. But the context in which India ascends the presidency of the G20 is something that can't be ignored. The world is going through a historic, difficult time, a time of war, a time of, hopeful renewal. There's a recession facing the world. There are multiple crises facing every possible country. And India is looked upon quite unanimously from across the world as a stabilizing force, an oasis amidst a great deal of chaos, especially in this part of the world. And the optics totally reflected that. We can dwell on the tweets in Hindi, we can, dwell on the handshakes and the back slaps. But I think beneath all that optical energy, there is a great deal of substance in how India has carried itself, the example that India has set, digitally, economically, in other ways. There's a long road ahead. It's not all hunky-dory. There's a great deal of things to do. Yes. But as far as setting an example for the rest of the world is concerned, navigating a truly difficult time, I think India, in many ways, has been unparalleled in these times. Okay, and I have my link with Geeta Mohan. Geeta, you are a person on ground. Let's move beyond the optics, Geeta. India worked hard to break this deadlock, including on Russia and Ukraine. India ensured this summit wasn't about blaming any particular country, but trying to ensure that the world comes together to find solution, whether it's on energy or food supplies.
what's the buzz on ground around India? Well, the buzz was absolutely positive, Gaurav. It's not just about the negotiations, which I'll explain to you in a bit, but let's just talk about the entire summit. Look at the statements of every leader. Every leader in his press conference or statement has mentioned India, more so because India has taken over or is assuming presidency of the G20 from December 1st onwards, and also the role that India ought to play. India is a major economy, and not just an emerging economy, one of the biggest economies and markets of the world. India has made its place and it's standing, and that's why there was a lot of positivity surrounding the idea of India assuming presidency of 2023. While she was talking about setting examples, Indonesia also set an example, Gaurav, and took a leaf out of Prime Minister Modi or India's book of how lifestyle for environment should be implemented on the ground. The entire G20 summit, the focus over here for Indonesia was the messaging: electric cars, electric bikes, no plastic, ensuring that they talk about climate change and environment. Island nations suffer and are more vulnerable than any other country or any other place in the world. Prime Minister Narendra Modi really talking about that, and every leader saying that they're looking at India. India today, with that document, the outcome document, where you spoke of the statement, the phrase, it is not an era of war, that has been incorporated, clearly shows that the voice of reason, the voice of peace, Gaurav, today is India. It stands in between the extreme West and and Russia and Ukraine when it comes to Russia and the war, the ongoing conflict. So clearly a voice of reason, negotiation, India diplomacy, is the voice dialogue of reason, diplomacy, as Geeta puts it. Geeta, stay with me. Ambassador Sachanar, for a diplomatic perspective, what do you make of how India was taken on the world stage at Bali? Thank you, Gaurav. I think it's a huge honor, it's a huge privilege for India to be given this opportunity. You know, you use two words, I think, in terms of, the criticism that has been made, that this is rotational and ceremonial. It might be factually accurate to say that it is rotational because all the 20 countries will get an opportunity to host the G20 summit sometime or the other. But you couldn't be further from the truth to say it is ceremonial. It is very substantive. As it's been made clear, both by Shiv and Geeta, and also I think the Prime Minister in his statement, that there are going to be 200 meetings through the year that are going to be held in 50 cities of the country. And they are going to be discussing very, very substantive issues. It's not ceremonial. It's not just on the 9th and 10th of September 2023 that the leaders will come and you meet and shake hands and go away. No, a lot of hard work will be done. That having been said, Gaurav, there is a lot that India can be proud of. Not only in terms of civilizational ethos, in terms of culture, what we have to sort of, project to the world. When all these people, delegations travel to 50 cities, they will look at the diversity of the country. But in addition to that, India has acquitted itself most creditably while dealing with all the challenges which emanated either from the COVID-19 pandemic or even from the Russia-Ukraine conflict. In terms of 2 billion doses being administered to the people, giving out, even when our own vaccination was going on, giving out 200 million doses, more than that, to more than 100 countries around the world. Feeding about more than 800 million people, with the food grains, providing them with this support. The digitization, I'll come to these aspects one by one. You're absolutely right. Let's take them step by step. Let me now bring in Anshul Avijit. Anshul, first the issue with the lotus as symbol of G20 presidency of India, and now saying India's G20 presidency in 2023 will be used for 2024 elections. But sir, isn't the Prime Minister talking about the effort being inclusive, ambitious, decisive and action-oriented, and G20 being organized in different cities and states across the country? Is this about India or is this about BJP? Exactly my point. It's, India is proud.
But I think BJP should be proud even more because the BJP symbol is now the G20 symbol. The problem is that this particular summit was politicized by the BJP, by this government and by the Prime Minister right from its very inception by including that logo. Not only that, when the Prime Minister talks about inclusivity, about equity, about about the poor, expresses some concern about the poor, irony dies 1,000 deaths. The gross levels of iniquity that exist in this country, the high levels of unemployment, of poverty, the way that our GDP has plummeted over the years, the way the unemployment has grown. The World Bank says that the number of poor, extremely poor people have increased by 5.5 crore over the last 2 years. The fact that you didn't order vaccines, I don't know what you're gloating. I don't know what this bombast and bluster is all about. These are all falsehoods. So you're saying vaccine is bombast and bluster? The vaccine. Let me bring that you did not order vaccines and the fact that you made vaccine. But let me take this to Syed Zafar Islam. Respond to Jairam Ramesh, respond to the Congress party saying it's routine, it's rotational, and that the BJP will tom-tom G20 in 2023 for 2024 elections, and that politicization started, as Anshul Avijit also echoed Jairam Ramesh saying, with the BJP symbol, the lotus, being the symbol of India's presidency. Gaurav, the Honorable Prime Minister has established himself as the global leader in last 8 years, without any confusion. India is on the verge of becoming another superpower. And the new India, and the Honorable Prime Minister is the architect of new India, is going ahead and doing so many new things which nobody has anticipated in Congress party. That's why these days, when events like G20, which will be hosted by India next year, they are seeing is more politically than the strength which is being demonstrated by India as a country, not by Bharatiya Janata Party and not by Congress Party, but India as a country. And it's an honor, as Ambassador Sanjana rightly said, it's an honor, it's a privilege to host such an event. And it definitely improves the image and stature of the country in the eyes of the global leader. Now you have to see that more than 500 global companies are exploring to invest in India. Why? Because India is a stable, politically stable, provide a good leadership, and India has everything which the global investor requires, and today they are making investment in India. The Congress is objecting. The Congress is objecting to the symbol. The politicization started just with the symbol of G20, as Anshul Avijit and Jairam Ramesh put it. See, Congress Congress will make such observation, everything Bharatiya Janata Party to strengthen the image of the country, and they will make this kind of a statement that we are using G20 for 2024 election. Can I quickly come in? Away from reality. Fact that it is an honor, India is hosting it. It has nothing to do with the election. In fact, every Indian should feel proud that such event of stature. I want to bring in Ambassador Ashok Sajanhar before I come back to Anshul Avijit. But Ambassador Sajanhar, I must compliment the Honorable Prime Minister, who is the architect of New India. Fair enough, sir. You've said that, sir. Ambassador Sajanhar, in the eyes of the global community. Prime Minister Modi said we will organize G20 in different states and cities. Together, we will make G20 a catalyst for global change. Sir, is there merit in the Congress saying, and I know it's a political question, that the logo itself is political, BJP's symbol is G20's symbol, and it's all about projecting BJP for 2024 elections? In my view, as a diplomat who has served the country, I don't think that there are any political connotations that I can see in it. After all, lotus is the national flower of India. And I think it's a beautiful flower. And I think in terms of, when the Prime Minister was launching and unveiling the logo, he said very clearly, meaning even in the darkest of, even in the most difficult of circumstances, a lotus always blooms. And you would recall, Gaurav, that when the managing director of the IMF, she was talking about the state of the global economy. She said in this entire, time of gloom and darkness,
the one ray of hope, the one beacon of hope is India, because India has been able to sort of, acquit itself so very creditably on all fronts, whether it is dealing with the after effects of the Russia-Ukraine conflict. There are 415 million, this is not my figure. Okay. This is not figure from any Indian economist, but this is a figure from the World Bank, which from the UNDP, sorry, which says that 415 million people have been lifted out of poverty from 2005 to 2019, and that there have been so much of progress in terms of people being removed from poverty from 55.6% to 11% over this period. So, I think people who are trying to deny this, they should be looking at statistics, they should be looking at facts. Anshul, rather than sort of, statistics and facts over politics is what Ambassador Sajjanhar also Gaurav, seems to can I indicate. just complete? Yes, I want to bring in Anshul Avijit quickly. What do you make of the Prime Minister's statement, era of war is ended, that line making it to the outcome document? Is that, again, election-oriented, or is that a very powerful global message that's being echoed, India's line being echoed by the world? Look, there is a respect that India has that has nothing to do with the Prime Minister, or that is despite the Prime Minister. It's a historical respect. It's related to India's democracy. There is a heft about India. Well, there was once a heft because it was wealthy. The wealth is depleted since this government came into power. It's about demographics. It's about the marketplace. India is a marketplace for global products. It's about data mining. So India has a different kind of position in the world. What I'm trying to say is, well, as far as the logo is concerned, I won't let that go so easily. When was the last time I heard that the Indian national flower was saffron in color? I thought the lotuses are supposed to be pink. What color do I see in this particular logo? I really don't know. So despite that, if you even leave aside the logo, Gaurav, the Prime Minister politicized this summit when he went to Bali and said that it was 2014 when there is a new India that emerges, completely dehistoricizing India's past and the contribution of other governments which have actually made India's GDP. Okay. Remember, and I got a number of facts at my command. If you want to go into facts, the GDP has plummeted, precipitously after this government came into power. The levels of unemployment have increased. Okay, I'll to restrict record levels. myself to G20 today, since you raised a point about G20 and India's domestic politics, being discussed internationally. Syed Zafar Islam, respond. Jairam Ramesh also raised the point. One, G20 will be used to divert attention from real issues, fears the Congress. Jairam Ramesh also says that this long tradition that prime ministers or governments do not carry domestic politics, prejudice or partisanship to Indian audiences abroad, that convention stands broken post-2014. I'll bring in Geeta Mohan, but before Geeta Mohan, quickly respond. I do not understand which... Yeah, respond, Syed Zafar Islam. No, I do not understand which issues... Shall I respond? Yes, please. Okay, I do not understand the Congress allegation that we want to, or Jairam Ramesh allegation that we want to divert attention. What attention we want to divert? Everything is going good for India. India's economy doing exceedingly well. The world acknowledges. Really? I think one should see the IMF report. You will see in terms of the GDP growth. The current account You'll see deficit, India the trade stand deficit, the weakening rupee, separately slowing in separate exports, column in terms of the high levels of in terms of poverty the and contribution it is unemployment, making and to the the Indian global. economy is doing well. Please do not interrupt. Please do not interrupt, Anshul. I didn't interrupt you in the big. I didn't interrupt. You can say whatever you want to say when your turn comes. Let me complete. I didn't interrupt you. I heard you. You are making a statement which is actually incorrect, but still I didn't interrupt you. All I'm saying that if you just want to see the IMF report, you will see how Indian economy is doing. And if all this statement which you are making is absolutely baseless and is only because of hatred you have for Modi, that's why you're making, even you are not acknowledging the fact that what the global leaders are acknowledging, global investment committee is acknowledging, India is doing exceedingly well. And India is the only country where inflation is under control, where all the macroeconomic parameters showing, showing actually
so bad during your tenure in 2013. You But know, today you see from this fragile debate, economy, it is the this best debate economy, is most about performing economy. the All rise the and roar of macroeconomic parameters India. are looking so good. India And on that the is world when stage. when it was terrible, you did acknowledge it. When it is doing very well, you have problem. When it is doing very well, and the world is acknowledging it. Before Let I me bring tell in you one Anshul, thing. Geeta Mohan. We do not Geeta, want to use G20 NATO or for that countries. matter, any other event for Sir, you made that 2024. point. Sir, you made that point. Geeta, NATO countries wanted the focus, and some G7. Sir, I'm giving equal time. No, sir, I'm giving equal time to all guests. I'm giving equal time to all guests. We'll have that. No, this is not correct, Gaurav. Okay, fair enough. Geeta, No, you are NATO not giving equal countries time. want to focus on blaming You Russia. have given enough but time to India, Anshul. I didn't interrupt you. He was interrupting and you didn't make any statement. Okay, Geeta. India wants to ensure the platform is not used for a blame game, but for a result-oriented approach for energy and food security. Geeta, this clearly is beyond domestic politics. Well, it absolutely is. Any multilateral fora where India is representing itself. Remember, Gaurav, the voice of India is very important. Why? Because Prime Minister Narendra Modi, and it is not just Prime Minister Narendra Modi, because we have politicians today on the debate on a foreign policy issue, Gaurav. Let me add that it was even Congress and now the Bharatiya Janata Party-led government that has been saying that the voice of the developing nation has to be heard by the developed world. Yes. It is happening now. Is a blessing. It is happening now is important. The fact that not just India, even Indonesia, as the during the presidency of the G20 said that G20 and forward-looking G20 has to be inclusive, that they have to hear the voices of developing countries, underdeveloped nations, least developed countries, and poor countries. Yes. That India certainly is going to be that face. India will allow inclusivity, and that's what Prime Minister Narendra Modi said. So the coming year is going to be very important. Why? Because the world is grappling with an economic crisis, Gaurav. It's not just rupee dwindling, which is a fact. It is not just rupee falling, which is a fact, but it is also that the fact that the entire global economy is suffering. It's not just India. But And one of in the that, aspects in such raised, a scenario, Geeta, when you're going to move forward, there's only one way, and that way is up. But when you're going absolutely. up and Ambassador you have to take everybody Sajanhar, along, the Prime and Minister that's set going the to be tone for agenda of India's India presidency, in the where he said coming one year. of the key focus areas for India would be principle of data for development. Digital transformation is the most remarkable change of our era, he said. Now, will that be seen as India's success story, or will the opposition perhaps look at that as BJP marketing itself for 2024? You know, I don't know what the opposition is going to do, but I think it will be doing itself a disservice if it were to look at it like this. I think the whole country needs to get together. The whole country needs to see G20 presidency as a project that is, each and every one of us has to adopt it and use it for projecting India, for promoting India in the world. Meaning, if we start, and this is exactly what the Prime Minister also mentioned when he was releasing the logo, I think we are talking about India's ethos. When he released the theme, it is one earth, one family, one future. So I think the whole country needs to really get together. If you just give me half a minute, I'll say, when there was a comment made that India's GDP is plummeting, in 2014, India was number 10 as far as global GDP was concerned. Today, India is number 5. It is $3.5 trillion. And even international organizations and agencies have said that India is going to become the 4th largest economy by the end by 2027, and the 3rd largest economy by beating both Germany and Japan by the beginning of next decade. So I think India is the fastest growing major economy in the world. Everyone acknowledges it. And I think if there are people who challenge it, they do it at the risk of hurting their own credibility and the trust in the statements. The point that India is making, and this is a point that the nation is making, that we need to move forward on the principle of Vasudhaiva Kutumbakam. To all my guests, many thanks for joining me. Look at that logo once again. That logo of G20 as India takes over presidency is all about Ayam Nij Paroveti Laghu Chetasam Udar Charitanam to Vasudhaiva Kutumbakam. The world
is one family. That's the line that India intends to move forward on. That is all I have for you on this broadcast. Many thanks for watching. Coming up next is a big political takkar from the state of war, Gujarat. Union Minister Purushottam Rupala takes on Congress Party's Amiben Yagnik. That big India Today exclusive debate coming up with Rahul Kanwal on the other side of a short break. Stay with us. News is about putting people first. Just look at the queues right across. About asking the right questions to those in power. Is money power being used to bring down elected governments? Who will be held accountable for ministerial corruption? It takes no sides. माँ का दर्द एक दर्द कोई नहीं समझ सकता उस दर्द को. It reveals, it heals. Angry people came out on the streets. Is this the kind of justice system we want in this country? News is all heart and no hatred. बिल्किस बानो आज क्या कहना चाहेंगी आप? हमारे साथ जो हुआ है किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए. Experience the news. With me, Rajdeep Sardesai, only on India Today. Is the monsoon season bringing relief to you from the hot summers? Well, what if we tell you that it can rain diamonds? Not certainly on Earth, but yes, it is raining diamonds on Uranus and Neptune. The temperature and pressure conditions on these planets are extreme. Due to this, carbon atoms can be crushed into diamonds. Uranus and Neptune are known by their unique blue shades. Both planets have a common condition to harden carbon atoms. But unfortunately, the inhospitable environment of the planet won't allow you to collect those diamonds. The blue color of these planets is due to methane. Methane has carbon in it. The carbon can be crushed by immense pressure that happens in the atmosphere. And when it gets hot and dense inside the planets, these diamonds are formed and accumulated. This causes them to rain in the atmosphere. Tell us what you think about this unique phenomena. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. गुजरात की पंचायत आज तक के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। क्या ये राज्य में एक पारंपरिक चुनाव होने वाला है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, या इस दफा एक तीसरी पार्टी भी अपनी जगह बनाने में कामयाब होगी? इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ अहमदाबाद में मौजूद हैं केंद्र के वरिष्ठ मंत्री और गुजरात में पॉलिटिक्स में बड़ा चेहरा पुरुषोत्तम रूपाला। रूपाला जी, स्वागत है आपका। और उनसे मुकाबला करेंगी डॉक्टर अमीबेन याग्निक, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं और सांसद भी। मैं आपसे स्टार्ट करना चाहता हूं क्योंकि बीजेपी के तमाम नेताओं से, मिनिस्टर से हम सुन रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की हालत गुजरात में देख के बुरा ही लग रहा है कि मतलब इतने बेमन से लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है गुजरात में। रूपाला जी भी चाहेंगे कि अगर पॉलिटिक्स का वर्ल्ड कप है तो सामने एक मजबूत टीम तो बॉलिंग तो अच्छे से हो, फिर बैटिंग होगी। लग ही नहीं रहा कि कांग्रेस कुछ अपने मतलब जोश से चुनाव लड़ रही है। अगर कांग्रेस पार्टी जोश से चुनाव नहीं लड़ रही होती तो वहां जो ये अखाड़ा हुआ है पड़ा वो नहीं होता। वो तो उनका खुद ही का किया हुआ है। नहीं, वो मुझे नहीं पता किसका किया हुआ है। और वो हमारी पार्टी से सिटिंग एमएलएज को उठा उठा के नहीं ले जाते। आई एम यूजिंग माइल्डर लैंग्वेज। तो वो ले नहीं जाते क्योंकि उनके वहाँ सिर्फ कार्यकर हैं जिनको जो वो काम देते हैं। लीडर्स बनाते नहीं हैं, तैयार लीडर्स ले जाते हैं। और उनके लीडर्स को आपने देखा पूरे सत्र में 5 years कंप्लीट करते हैं चीफ मिनिस्टर और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। फ्रॉम द टाइम आई अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स, फ्रॉम स्कूल डेज और कॉलेज डेज, बीच में से पूरी कैबिनेट को घर बिठा दिया।
वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर उफ तक नहीं करते। और आप इतना डिफिकल्ट सवाल पूछते हो, ऐसा समझते हो कि डिफिकल्ट है। कांग्रेस इज फाइटिंग टूथ नेल एंड हैमर। आपस की बात नहीं कर रहा, मैं बीजेपी से बात कर रहा हूं। बीजेपी की बात कर रही हूँ, तभी तो इनको इतना कष्ट पड़ रहा है, वरना 182 कब का वो पहले लिस्ट में डिक्लेयर कर देते। सबको बिठा दिया है, नए लोगों को ला रहे हैं, आम आदमी पार्टी आई है, वो इतना बेफाम बोल रही है सबके लिए, एक भी रिटॉर्ट नहीं है, उसका जवाब तक नहीं देते। तो मतलब है ए टीम है, बी टीम है, वो ही है, पता नहीं चलता है। तो डोंट टॉक अबाउट आम आदमी पार्टी, बट कांग्रेस इज गोइंग टू गेट 125। वी आर विनिंग नाउ। जिस पार्टी 27 साल से नहीं है, आप बोलते रहते हो 27 साल से कांग्रेस नहीं है, दिख नहीं रही है, तो उठा क्यों ले जा रहे हो हमारे एमपी एमएलए? वो छोड़ के क्यों जा रहे हैं मैडम? नहीं, वो छोड़ के जा रहे हैं। वी हैव नथिंग टू ऑफर, वी आर नॉट इन पावर। व्हाट आर यू ऑफरिंग? टेल द पीपल, बी ट्रांसपेरेंट। What are you doing that you are taking away so many MLAs and all that? No, let me complete. Achha. Let me complete. So Congress is there, and that is why all the time they say Congress कहीं दिखती नहीं है। अरे भाई क्यों दिखती नहीं? दिखती है तो तभी तो ले जाते हो तुम सबको। कांग्रेस नहीं है तो तुम चिंता क्यों करते हो? आप इतने खुश होके बोल रहे हो ले जाते हो तुमको, आपके जा क्यों रहे मैडम लोग छोड़ के? नहीं, we are winning. That is why. We are winning फॉर द बीजेपी, मतलब कांग्रेस के वो लोग बीजेपी जाके जीत रहे हैं। नहीं, वो तो मैं उनकी हालत बता रही हूँ कि आप कांग्रेस मन बेमन से कर रही है। अरे कांग्रेस इज फाइटिंग टूथ नेल एंड हैमर, जमीन पे है, इतने सारे मुद्दे दे रही है कि भाई तुमने यहाँ स्कूल नहीं बनाई है, गवर्नमेंट स्कूल्स बंद कर दिए हैं, प्राइवेट प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में डॉक्टर नहीं है, स्टाफ नहीं है, कोरोना में क्या हुआ, मोरबी की बात हम नहीं करते, एक जो डिजास्टर हो गया, पर इसके बारे में कोई आके कहता है कि हम तो तुरंत ही पहुंच गए। तो पहुंचना ही है, गवर्नमेंट का काम यह है। रूपाला साहब, अगर बीजेपी इतनी मजबूत है तो आपकी पार्टी को कांग्रेस के इतने नेता तोड़ के क्यों लाने पड़ रहे हैं? आपके खुद के कार्यकर्ता कमला में बवाल काट रहे हैं, कह रहे कि हमें मौका नहीं दे रहे, हमारे सर के ऊपर कांग्रेसियों को बैठा रहे हो। देखो, मैं बहुत ही विनम्रता से इस बहस में हमारी दीदी अमी बहन जी को जवाब देना चाहूँगा। बहुत ही शालीन, और मैं इसका बहुत ही रिस्पेक्ट करती हूँ, और राज्यसभा में मेरे साथी होने से मुझे भी एक बहुत ही बड़ा अच्छा उनके बर्ताव से मैं कह सकता हूँ। मगर उन्होंने और आपने ऑफर तो नहीं दे रहे कि आप भी आ जाओ, 20 आ गए, एक और आ जाए? नहीं, ऐसा ही लगा, इतनी विनम्रता से आप जवाब दे रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं। मेरा सिर्फ इतना ही इसमें सुधार करना है, जवाब भी नहीं देना चाहता हूँ कि हम तोड़ रहे हैं। पहले तो ये सारी बातें उठा के ला रहे हैं, उठा के ला रहे हैं, वो भी कह रहे हैं मैं शालीन भाषा का इस्तेमाल ले जा रहे हैं, हम लालच दे रहे हैं। और हमारी दीदी ने ये भी बताया कि उनके पास कुछ ऑफर करने के लिए नहीं है और हम सत्ता के लिए इनको ऑफर दे रहे हैं। राजकीय पार्टी में जो भी बंदा आता है उसका पहला लक्ष्य सत्ता ही होता है। और हमने जब काम करना शुरू किया था तब दूर क्षितिज तक भी कहीं सत्ता नजर में भी नहीं आ रही थी, तब से हम काम कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं को सत्ता के साथ जोड़ के देखना, वो मैं मान रहा हूं, वो तो बहुत स्वाभाविक चीज है। दूसरा, कैसे नेता आ रहे हैं, तोड़ा किसको जाता है? 11 बार के विधायक मोहन सिंह जी राठवा, जिसको मैं आपके सामने, मीडिया के सामने, दर्शकों के सामने मैं एक्सेप्ट करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का एक वरिष्ठ कार्यकर्ता होने के नाते भी एक्सेप्ट करना चाहता हूं कि हम इनको हरा नहीं पाए इंडिविजुअल तौर पर। वो नेता जब पार्टी छोड़ देता है तब उसको उठा के ले जाना। जब हम मैदान में खड़े उनके सामने कभी परास्त नहीं हुए, वो जब छोड़ के निकल जाते हैं खेमे से, तब पार्टी को सोचना होता है, हमें सोचना नहीं होता है कि हम इनको क्यों ला रहे हैं, हमारे दल में इनको क्यों शामिल कर रहे हैं। ये पार्टी के पॉलिटिक्स में लोगों का एक दल से दूसरे दल में जाना आना, ये परंपरा से भारत में, पूरे देश में ये घटनाएं चलती रहती हैं। मगर कुछ छोटे मोटे कार्यकर्ताओं का होता है, तब तक तो कुछ भी बातें चलाते रहे तो होता रहता है। मगर जिनके नाम से पार्टी जानी जाती है,
वो पार्टी मतलब गुजरात में मैं ये कह सकता हूं कि मोहन सिंह जी कांग्रेस, कांग्रेस माने मोहन सिंह जी, इतने वरिष्ठ नेता को दल जब छोड़ना पड़ता होता है तो उनको भी कष्ट हुआ होगा। और इसको इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी तोड़ रही है वो गलत चीज है, कांग्रेस टूट रही है उसको एक्सेप्ट करके वो टूटने से बच जाए। प्राथमिकताएं भी गड़बड़ हैं क्योंकि आप लगे हो भारत जोड़ो में, पहले कांग्रेस को तो जोड़ लो, फिर भारत जोड़ने की आप चिंता करो। राहुल गांधी केरल में है, तेलंगाना में है, महाराष्ट्र में, अब तक गुजरात आए नहीं। मतलब मैच कहीं चल रहा है, उनकी प्रैक्टिस कहीं चल रही है। नेट प्रैक्टिस में शॉट मार के क्या होगा, जहां चुनावी मैच है वहां आके खेले। देखिए, एक तो ये जो हमारे भाई साहब हैं, बड़े भाई साहब हैं, उन्होंने कहा कि तोड़ रहे और टूट रहे, हाफ ग्लास फुल और हाफ ग्लास एम्प्टी का है। ये सब वाक्य रचना की बातें हैं। सही बात जो है सब देख रहे हैं और बार बार एक ही बात समझाने की जरूरत नहीं है। कोई फर्स्ट स्टैंडर्ड या सेकंड स्टैंडर्ड का क्लास नहीं है। तो इट इज हाफ ग्लास फुल, हाफ ग्लास एम्प्टी, ऐसी बात है। पर वो वास्तविकता सही है कि बाहर से आप लेके आते हो। दूसरी बात, आपने बोला भारत जोड़ो, आपका पार्टी ठीक करो, ये व्हाट्सएप का कंटेंट है। हमारी पार्टी जुड़ी हुई है, ये हैज गॉन। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो इसलिए कर रहे हैं, वो तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक कर रहे हैं। हमारी पार्टी जुड़ी हुई है तभी तो लड़ रही है, इतने लोग साथ में है। तो कहाँ आप मुझे, आप सब यहाँ बैठे हैं, आप जरा सोचिए और बताइए कि कभी ऐसा हो कि वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है और आपका जो मेन बैट्समैन है वो नेट प्रैक्टिस कर रहा है किसी और मैच में, जहां पे मैच ही नहीं है। जब मैच है, बैट्समैन है, तो वहां आके बैटिंग करे। ये तो पहली बार है कि वो बैटिंग ही नहीं कर रहा है। मैं आपको बता रही हूँ ना, वो बैट्समैन है, मेन बैट्समैन है, बट ही इज ऑन अ मिशन। और वो तो अभी पार्टी से भी उठ गए, ऐसे काफी लोग एनालिस्ट ने बताया। पार्टी से उठ के कहां चले गए? डेफिनेटली व्हेन यू आर वॉकिंग 3,400 किलोमीटर्स इन अ कंट्री, नॉट बाय कार और गोइंग ऑन अ स्कूटर और सम हेलीकॉप्टर, यू आर ट्रैवलिंग, यू आर मीटिंग। वो तो आयरन मैन का कॉन्टेस्ट लड़ सकते हैं ना, उसका पॉलिटिक्स से क्या लेना देना। ये तो शब्दों की माया जाल में नहीं मैं पढ़ना चाहती हूँ, पर ये बात सही, हमारे प्रेसिडेंट है ना, नए प्रेसिडेंट है कांग्रेस के अभी जो आए हैं, तो वो आएंगे। बैट्समैन तो सभी है ना, हर जगह एक ही बैट्समैन बोलता है ऐसा नहीं होता है। हर जगह सारे बैट्समैन बोलते हैं। देयर इज इक्वालिटी इन अवर पार्टी, सब आके बोलते हैं। एक स्क्रिप्ट नहीं दी जाती है कि वो बैट्समैन बोले तो ही वही बोलने का सब। ये जो बात है ओवर सेंट्रलाइजेशन की, रूपाला साहब, कि ये गुजरात में मैं घूम रहा था अलग अलग जगहों पे, लोगों को लगा कि अरे वो दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से चलती है, यहाँ पे जो है गांधीनगर में इनका तो कुछ है ही नहीं, वो तो जो 1 और 2 ने डिसाइड किया वही यहाँ पे करना है। तो ये तो बड़ी दिक्कत हो रही है यहाँ पे। देखो, ये 1 और 2 का है कहां से, ये लोग भूल जाते हैं। ये 1 और 2 भी गुजरात से ही है। ये 1 और 2 कहीं से नहीं है। हमारे ही खिलाड़ी थे, वो रणजी ट्रॉफी से अब नेशनल पे खेल रहे हैं। इसका हमें गौरव है, हर गुजराती को इनका गौरव है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। आजादी के संग्राम से ये दृश्य हम देश को दिखा रहे हैं। उस समय भी हमारे खिलाड़ी ही खेल रहे थे, उसका नाम महात्मा गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल था। आज देश इनको सुन रहा था, आज भी सुन रहा है। आज भी आसाम में हो, वहीं भी वो वहीं से ही मार्गदर्शन मिलता है। तो हमारे ही खिलाड़ी जो स्टार बैट्समैन गुजरात में रहकर भारत को अब दिशा निर्देश दे रहे हैं, और मैं कहने में मैं झिझकता नहीं हूं, पूरे विश्व को मार्गदर्शित करने की भूमिका में हमारे मोदी जी जब खड़े हैं तो हमको मार्गदर्शन करें, उसी में उनकी चलती है ऐसा नहीं मानना चाहिए। ये हमारा सौभाग्य है। नहीं सर, इतना सिंपल नहीं है। आप जरा क्रिकेट से निकल के गाड़ी में आइए। अब आप गाड़ी चला रहे हैं, आप ड्राइवर हैं, ठीक है। अब आप सोचिए, आप गाड़ी चला रहे हैं ऐसे ऐसे, आप भूपेंद्र पटेल हैं, आगे से दूसरी गाड़ी आ रही है, अब या तो आपको लेफ्ट लेना है या राइट, वो लेफ्ट ले या राइट, उससे पहले वो पीछे देख रहे हैं, अरे भाई गाड़ी तो आगे से आ रही है, तो फैसला आपको वहां पे लेना है और ड्राइवर ने लेना है। ये बार बार दिल्ली से सब चीजें होंगी, रिमोट कंट्रोल से होंगी, उसी चक्कर में तो गाड़ी एक्सीडेंट कर रही है, आपको अपना ड्राइवर बदलना पड़ रहा है, विजय रूपाणी आपको हटाने पड़ गए। देखो, मुख्यमंत्री श्रियों का बदलाव करना या होना, ये लोकतंत्र में इतनी बड़ी बहुत गहरी घटना नहीं है। विजय रूपाणी जी को जब बदला गया तो उस समय कोई इसके सामने कोई बड़े
एलिगेशंस थे या बड़ी वो कोई एंटी इनकम्बेंसी आ गई थी, उसको बदलने के कोई नारे चल रहे थे, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं। क्यों हटाया फिर? सब ठीक चल रहा था तो? देखो, बदलाव पॉलिटिक्स में परिवर्तन का होना बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है। ऐसे थोड़ी आप योगी जी को थोड़ी हटाओगे। 5 साल रहे। अरे अगर कुछ गड़बड़ ना हो, अभी योगी जी चल रहे हैं यूपी में, अगर कुछ गड़बड़ नहीं होती आप हटाओगे थोड़ी, योगी जी को थोड़ी हटा, जहां कुछ गड़बड़ है वहीं हटाओगे ना। नहीं, गड़बड़ से ही हटना ऐसा नहीं होता है। 5 साल तक उन्होंने नेतृत्व दिया गुजरात को। विजय भाई रूपाणी 5 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद उसको बदला गया है। भारतीय जनता पार्टी, हमारी बहन जो बता रही थी कि इनके पास नेता नहीं है, इसीलिए हम वहां से उनके नेताओं को उठा के ला रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे पास बहुत बड़ी लंबी सूची है और इसी के चलते आज पूरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में जनता भारतीय जनता पार्टी के चुनाव को समर्थन देकर लड़ रही। 2 चीजें हैं अमी बहन जी, एक ये कि विपक्ष चुनाव लड़ती है जीतने के लिए, और एक होता है लड़ती है लड़ने के लिए। मतलब जीतने के लिए आदमी जोश से लड़ता है, जुनून से लड़ता है, जैसे मोदी जी 2014 में लड़े, 19 में लड़े, योगी जी लड़े उत्तर प्रदेश में, कि मतलब पूरी ताकत लगा के मतलब जो हो जाए अब जीतना है। एक ही कि मतलब फिल इन द ब्लैंक्स, अब जो औपचारिकता है वो पूरी करनी है इसलिए लड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस लड़ने के लिए लड़ रही है और आम आदमी पार्टी जोश से लड़ रही है। उनकी वास्तविकता नहीं है, हैसियत नहीं है इतनी, लेकिन वो जोश से लड़ रही है। वो लड़ रही है बीजेपी से, एकदम मतलब छोटी सी ही हो अभी, लेकिन वो दंगल में लड़ रही है। आप लड़ ही नहीं रहे ठीक से। हम लड़ रहे हैं, वो दिख रहा है, इसलिए प्रॉब्लम है। अब हर बार दिख रहा है? नहीं, तभी तो ये सवाल उठते हैं ना। आप आम आदमी पार्टी को क्यों बीच में लाते हैं? वो दिल्ली का मॉडल लेके आए हैं, हमारी जो सत्ता पक्ष में जो लोग हैं वो चुप बैठे, क्या बताएंगे? सरकारी स्कूलें बंद कर दी हैं, वो वहां से शिक्षण का मॉडल इनको दिखाने के लिए लाते हैं, और वो खुद आईआईटी जो कांग्रेस ने बनाई है पोस्ट इंडिपेंडेंस, उनमें पढ़े हैं, और हमें शिक्षा की बात कर रहे हैं, शिक्षा मॉडल की। यहाँ कोई भी नेता बता नहीं रहा है कि 17,000 स्कूलें बंद हो गई है, 19,000 स्कूलों में कमरे नहीं है, 100 स्कूल के बीच में एक ही शिक्षा के कक्ष में, बता रहे हैं ये बातें बताओ ना। रिमोट कंट्रोल की बात नहीं बताई उन्होंने बोला बदल देते हैं। 2 चीज थी, इनइफेक्टिव थी सरकार कोरोना समय पे, जवाब नहीं दे पा रही थी, या तो उनका रिपोर्ट कार्ड खराब था या तो वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे। क्या था? क्या आपने पूरी कैबिनेट को घर पे बिठा दिया? ऐसा नहीं होता है कि हाँ बदलते हैं, नहीं, यू हैव टू गिव रीजंस। ये कोई ऐसे डिबेट, ठीक है कभी कभी ऐसे लाइट डिबेट्स होते हैं, बट व्हेन यू आर टॉकिंग सीरियस इश्यूज प्लीज टेल द ट्रूथ। ये आप मानेंगी आनंदी बहन जी की ये जो बात हो रही है कि आनंदी बहन जी ने काम किया, उसको अब रूपाणी जी आगे लेके गए, फिर भूपेंद्र पटेल लेके जा रहे हैं, कि मतलब जो भी हो जैसा भी हो, इतनी एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ अमी बहन जी बिल्ड नहीं हुई कि बीजेपी हार जाए और कोई और पार्टी जीत जाए। ठीक है, कुछ नाराजगी है, कुछ एंटी इनकम्बेंसी है, कुछ एक तरीके से सेमनेस वाली फीलिंग आ रही है, लेकिन इतनी कोई आक्रोश नहीं है कि मतलब सत्ता परिवर्तन हो जाए। आपका सवाल का मैं जवाब देती हूँ, पर मुझे ये पता था ये कहेंगे कि वो अज्ञान है। इनका एक स्टैंडर्ड सेंटेंस है, जो भी आपके पास आएंगे वो हमको अज्ञान बताएंगे। मैं इसीलिए मिनिस्टर्स के आंसर्स लेके कभी लेके नहीं आती हूँ फोन में, कागज लेके आती तो ठीक नहीं लगता, इसलिए विधानसभा में जो आंकड़े दिए ना वही मैंने बताए, मैं लेके आई हूँ और आपको बताऊंगी, आप फ्लैश कर देना। उनके मिनिस्टर्स ने मार्च में जो जवाब दिए हैं, मैं अभी गुनाहित पे तो क्रिमिनल एक्टिविटी पे तो नहीं जा रही हूँ, उसके भी उन्होंने कहा है कि अहमदाबाद में 5 रेप होते हैं रोज के, दिस इज क्राइम रिकॉर्ड ऑफ गुजरात। तो मेरा कोई डेटा है नहीं यहाँ पे, कोई ऐसा डेटा कर भी नहीं सकता है यहाँ पे, तो गवर्नमेंट का डेटा जो आता है वो मैंने बताया। तो मैं अज्ञान नहीं हूँ, इसलिए कि आई एम बोर्न इन अहमदाबाद। मैंने गुजरात के सारे जिले में टूर किया है, मैं पॉलिटिक्स में नहीं थी, मैं लीगल वर्क कर रही थी, फ्री लीगल वर्क, इसीलिए मुझे सारे जिलों में कौन सी जगह कौन सा इश्यू है, पानी का है, आटा पाटा जो कहते हैं ना, भाई बहन का रिलेशन दूसरे भाई बहन से होता है, ये सारे कहीं कौन से एरिया में कौन से इश्यूज है, तो मैं यहाँ आई कैन क्लेम आई एम अ गुजराती और मैं अज्ञान नहीं हूँ। सो माई स्टेटमेंट्स विल बी वेरी वेरी रेलेवेंट एंड इंफॉर्मेटिव एंड वेरी ट्रू। रूपाला जी, ये विपक्ष कहता है कि जिस तरीके से मोरबी का पुल गिरा, गुजरात का विकास मॉडल भी उसी के साथ गिर गया, वो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, शिक्षा हो। उनको लगता है कि जो आप दिखाते हो गुजरात की हकीकत वो है नहीं। मैं एक तो बहुत विनम्रता से हमारी बहन की वो बात के साथ सहमत नहीं हूं कि मैं उनको अज्ञान कहता हूं। मैं उनकी विद्वता को मान्यता भी देना चाहता हूं, बड़ी हमारी अभ्यासु बहन है, इसलिए वो इश्यू ही नहीं है वो। मगर मैं 2 चीजों पे जरूर आपसे बहस करना चाहूंगा और
दीदी के सामने बताना चाहूंगा कि हेल्थ में आपकी सरकारें जब तक रही तब तक गुजरात जैसे राज्य में 108 नहीं थी, कहीं पे नहीं थी। गुजरात में 108 भारतीय जनता पार्टी के शासन में आई, नरेंद्र भाई मोदी जी के शासन में आई। गुजरात में साहब मैं मुझे बड़े फख्र से बताना चाहता हूं, जहां दीदी रहती हैं उस अहमदाबाद में आज विदेश से लोग भी दवा कराने के लिए अहमदाबाद को आते हैं। इंटरनेशनल पेशेंट्स आज अहमदाबाद की सिविल हॉस्पिटल में आते हैं। ये गुजरात का हेल्थ का मॉडल है, वहीं से हमने शुरू किया था। एजुकेशन के बारे में, पानी के बारे में आपने बोल दिया, क्या कर दिया। वो बताते कि पानी के बारे में क्या हुआ, मुझे ये विषय छेड़ना ही नहीं था। पानी के बारे में तो कांग्रेस के लोग ना बोले तो ही अच्छा, इसीलिए कि पानी के बारे में गुजरात का एकमेव स्रोत है वो नर्मदा का, हमारा पानी का जल स्रोत था। नर्मदा बांध को 10 साल तक डिले करने का काम दिल्ली की कांग्रेस सरकार के सिर पे लखा हुआ है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी को अनशन पर बैठना पड़ा था, उसकी परमिशन मांगने के लिए, इसको उसकी हाइट बढ़ाने के लिए। 4 राज्यों की लाइफलाइन, अकेले गुजरात की नहीं, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ऐसे 4 राज्यों के लिए जिस योजना का महत्व था उसको परमिशन देने में 10 साल लगा। हम सांसद लोग संसद में चिल्ला चिल्ला कर थक गए, परमिशन नहीं आई। 10 साल तक जिस चीज की परमिशन नहीं आई थी भाई साहब, नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बनने के बाद 17वें दिन में ढाल में जैसे पानी आए, ऐसी परमिशन गुजरात को मंजूरी की प्रधानमंत्री कार्यालय से, गुजरात के कार्यालय में आ गई, बिना मांगे आ गई। वो जल स्रोत ही नहीं था, पानी दे तो दे कहां से दे, वितरण की व्यवस्था करे तो कहां से करे। आज मैं मानता हूं गुजरात में ही नहीं, भारत में ही नहीं, पूरे एशिया में गुजरात में पानी का जो नेटवर्क है, ऐसा कोई नेटवर्क एशिया में नहीं है। सबसे बड़ा पानी का नेटवर्क भारतीय जनता पार्टी के शासन में गुजरात में बनाने में हम कामयाब रहे हैं। चलिए कुछ सवाल हम लोग दर्शकों से भी लेते हैं। यहाँ पे डॉक्टर गीतिका पटेल हमें बताया गया जो सवाल पूछना चाहती हैं पारुल यूनिवर्सिटी से। मैम आप पूछे, कोई उनको अगर माइक दे दे तो फिर वो सवाल पूछ पाए। वो रही आई माइक आपके पास। मैं हायर एजुकेशन को रिप्रेजेंट करती हूँ सर, यूनिवर्सिटी की ट्रस्टी और डायरेक्टर हूँ। मेरा सवाल एजुकेशन से रिलेटेड है। आज बहुत सी विकास की बातें हमने की और आई थिंक सब सहमत होंगे कि विकास की जो फाउंडेशन है उसमें एजुकेशन होता है। बहुत से चेंजेस लास्ट डिकेड में और लास्ट ईयर्स में आ रहे हैं गवर्नेंस और पॉलिसीज में इन एजुकेशन फॉर बेटरमेंट। एक रिसेंट चेंज जो लाया जा रहा है सर, वो ये है कि हमें अपने एजुकेशनल प्रोग्राम्स, प्रोफेशनल प्रोग्राम्स वर्नाक्युलर और रीजनल लैंग्वेजेस में ऑफर करने हैं। अब एक तरफ हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि हमारे बच्चे ग्लोबली कॉम्पिटेंट हमें बनाने हैं, कहीं भी जाके वो खड़े रहें, सो दे शैल बी ग्लोबली कॉम्पिटेंट। एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि हमें सारे प्रोफेशनल प्रोग्राम्स रीजनल लैंग्वेज, यहाँ की बात करो तो गुजराती में ऑफर करना है। तो किस तरह से हम इसमें जस्टिस दे पाएंगे, किस तरह हम मैच कर पाएंगे हमारी एक्सपेक्टेशंस को, ये एक मेरा सवाल है। भारत की नई शिक्षा नीति में एक बेसिक बदलाव लाने का जो प्रयास किया गया है वो है मातृभाषा में शिक्षा का होना। आपकी इस बात के साथ मैं ज़रूर सहमत हूं कि हमारे छात्रों को हम वर्ल्ड क्लास कंपटीशन में काबिल होने के लिए उसी के लेवल का एजुकेशन का सिस्टम हमें बनाना चाहिए। आपके मन में दुविधा ये है कि यदि हम रीजनल भाषा में इसकी शिक्षा देंगे तो क्या वो इंटरनेशनल लेवल पे उनकी कंपटीशन करने में कामयाब रहेंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ ऐसे कई देश हैं जहाँ उनकी भाषा इंग्लिश नहीं, हमारे मन में तो इंग्लिश ही है और मैं इंग्लिश का विरोधी नहीं हूँ, मगर मैं ये जरूर बताना चाहता हूं कि रीजनल भाषा में, प्रादेशिक भाषा में, अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजराती भाषा में पढ़ने वाले बच्चे भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका मुकाबला करने के लिए काबिज हो ही सकते हैं। उसमें कोई दुविधा रखने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक सवाल है वो मातृभाषा से जुड़े रहे, मातृभाषा को साथ रखते हुए
अंग्रेजी ही नहीं, कोई भी भाषा में उसको काबिज करने का प्रयास होना चाहिए, उसी में भी कोई दिक्कत नहीं है, मगर मातृभाषा से जुड़े रहने से ही उसमें अपने संस्कारिता का, अपने संस्कार का, अपनी जो वारसा है अपना, उसका उसमें आना वो मातृभाषा के जरिए ही आ सकता है, इसीलिए उसका प्राधान्य देना बिल्कुल जरूरी है। अमी बहन जी, इस बार कांग्रेस थर्ड आएगी कि सेकंड? फर्स्ट आएगी, फर्स्ट। आपको वाकई में लग रहा है कि फर्स्ट है? फर्स्ट। क्या चीज है जो आपको थोड़ा सा विश्वास दे रही है? क्योंकि जब कांग्रेस के नेताओं से बात करो तो वो ज्यादा उस तरीके से अग्रेसिव या उत्साहित नजर नहीं आ रहे। आप यहाँ मंच पे बोल रही हैं अच्छे से, पर मैं तो जा रही हूँ ना हर डिस्ट्रिक्ट में काफी समय से, इसलिए मैं कह रही हूँ कि बहुत उत्साह है। और जो प्रजा के प्रश्न है ना, वो मैंने जो अभी बताया ना, दे वर द कॉमन क्वेश्चंस एंड इश्यूज। रूपाला साहब, आपको क्या लग रहा है, कांग्रेस सेकंड आएगी कि थर्ड? नहीं, आप क्या चाहते हो, कांग्रेस सेकंड आएगी थर्ड? मैं कांग्रेस को प्रतिपक्ष में 2 नंबर पे ही रखता हूं, क्योंकि तीसरी कोई पार्टी का यहाँ गुजरात में बहुत लंबे अरसे से कोई स्थान नहीं है, तो अभी नए पर आपने कभी ये देखा होने की कोई संभावना नहीं है, मगर जितना जोर से कांग्रेस बोल रही है उतने जोर से तो बीजेपी बता रही है कि नहीं नहीं, ये बड़ी अच्छी टीम है, बड़ी अच्छी पार्टी है, बड़ी मजबूत पार्टी है, प्रबल विपक्षी पार्टी कांग्रेस ही है। मतलब ये तो आप तो पहले कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, अब तो आप चाहते हो कि भारत युक्त रहे कांग्रेस से, वरना केजरीवाल आ जाएगा। देखो, कांग्रेस मुक्त भारत का नारा हमने अवश्य दिया है, मगर कांग्रेस को हम शासन से हटाना चाहते हैं, राजनीति से हटाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। वो शासन में नहीं आए, हमारा मतभेद वो पॉलिसियों को लेकर है। आपने क्रिकेट की इतनी बात की, आप चाहते हो कि एक जिम्बाब्वे टाइप की टीम बनी रहे? नहीं, मतलब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड जिम्बाब्वे टाइप की भी नहीं, मजबूत विपक्ष के रूप में वो खड़े रहे, वो हम चाहते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में विपक्ष का एक बहुत अहम स्थान है, और इसीलिए डेमोक्रेसी आसान में विपक्ष हो जिसके एमएलए आप ले आए तो और भी ज्यादा आसान है आपके लिए। नहीं, शब्द यूज करिए, युक्त। उनकी पार्टी कांग्रेस युक्त हो गई है। नहीं, इसमें मुझे तो लगता है कि कांग्रेस के खिलाफ तो दीदी होगी ही नहीं, इसलिए वो कांग्रेस युक्त का कोई गलत अर्थ तो नहीं निकालती होंगी इसके हिसाब से भी। मगर ये जो यहाँ अभी माहौल चल रहा है ना, इसमें एक चीज की चर्चा हमसे छूट जाती है कि जब देश का कोई नेता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का मान बढ़ाने का काम कर रहा होता है, तो उस राज्य में उसकी जनता को इनके प्रति जो आदर होता है, ये भी इस चुनाव में एक बहुत अहम कारण भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत देने के लिए काम में आने वाला। वो तो 2024 का चुनाव है ना सर, ये तो यहाँ के एमएलए का चुनाव है। अगर ये रहता है ना, आप हर बार करते हो कि एमएलए की शक्ल मत देखो, मोदी जी की शक्ल देखो। ऑफिशियली बोल रहे हो आप कि एमएलए को मत देखो, बस आप मोदी जी की शक्ल देखो, वोट डाल दो। नहीं, मगर वो है ही, क्योंकि ये नहीं, इसके वो भी आता है ना कि हमारे प्रधानमंत्री हैं तो हम प्रधानमंत्री की बात क्यों नहीं करेंगे। 2024 का चुनाव है ना सर, ये तो असेंबली का चुनाव नहीं, अभी नहीं है कांग्रेस के पास, वरना हमारे मनमोहन सिंह जी भी यहाँ विधानसभा के चुनाव में आते थे, मोदी जी के थोड़ी कैंपेन, प्रधानमंत्री के तौर पर आते थे और हम यहाँ आके प्रचार करते थे। वो ऐसा नहीं होता, तो जिनके दल का होता है वो आते ही, केंद्रीय मंत्री होते तो आते ही थे, हमें इनका जवाब देना पड़ता था। ऐसा नहीं होता है। तो हमारे प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, गुजरात के प्रधानमंत्री हैं, तो इसका तो बेनिफिट क्यों नहीं? इस चुनाव की एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि एकाएक बीजेपी को कांग्रेस में गुण दिख रहे हैं कि नहीं ये ठीक है, इतने बुरे ये नहीं है। आप यहाँ पे आए पुरुषोत्तम रूपाला जी, आपका बड़ा हेक्टिक कैंपेन शेड्यूल चल रहा था, अमी बहन जी आप भी आई यहाँ पे, थोड़ा सा उन्होंने आपको ऑफर दिया कि एक तरीके से आप भी आ जाइए, आपने कुछ बोला नहीं। हाँ नहीं, अच्छा ऐसा नहीं, ठीक है, उन्होंने मना कर दिया। वो भी थे हंसते हंसते बोल रहे नहीं भाई ऑफर भी देंगे, तो ऐसे कैमरे पे नहीं देंगे, किनारे में देंगे, मुझे मत पसंद। बीजेपी अपने स्क्रिप्ट से बाहर नहीं जाएगी। माइक ले, बीजेपी अपने स्क्रिप्ट से बाहर नहीं जाएगी। क्या है वो स्क्रिप्ट? सबको सुनो, आप पूरे दिन सेम ही आएगा कंटेंट। अच्छा चलिए, रूपाला साहब आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। अमी बहन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।